तो जो लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। 2026 के एग्जाम्स की पहली झलक, हाँ आपने सही सुना, 2026 वो आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। अब देखिए, पूरे देश में लाखों स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा कि भाई ये 2026 के बोर्ड एग्जाम्स आखिर होंगे कब। तो लीजिए, इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th दोनों के लिए अपनी टेंटेटिव डेट शीट मतलब एक तरह से कच्ची डेट शीट जारी कर दी है। और इसमें जो पहली चीज़ है ना, जो सबका ध्यान खींच रही है, वो है इसका टाइम फ्रेम। एग्जाम्स 17 फरवरी से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेंगे। अरे बाप रे, ये तो लगभग 5 महीने हो गए। सवाल ये है कि इतना लंबा शेड्यूल क्यों रखा गया है। अच्छा, तो अब अगला सवाल मन में ये आता है कि भाई इतनी जल्दी अनाउंस करने की क्या जरूरत थी। एग्जाम में तो भी 1 साल से भी ज्यादा का टाइम है। असल में ये सीबीएसई की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। देखिए, इतनी पहले डेट्स बताने का सीधा मतलब है कि आखिर में कोई सरप्राइज ना हो। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई का पूरा रोडमैप बनाने का भरपूर टाइम मिल जाता है। स्कूल अपने सारे इवेंट्स और छुट्टियां इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और हाँ, टीचर्स भी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना काम और अपनी छुट्टियां प्लान कर सकते हैं। और प्लानिंग की जरूरत क्यों है, इसका अंदाजा इस नंबर से लग जाएगा। 2026 में करीब करीब 45 लाख स्टूडेंट्स के इन एग्जाम्स में बैठने की उम्मीद है। 45 लाख! जरा सोच कर देखिए, ये कितना बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। 204 अलग अलग सब्जेक्ट्स, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 26 दूसरे देशों में भी स्टूडेंट्स ये एग्जाम देंगे। तो इतने बड़े स्केल पर सब कुछ संभालने के लिए एडवांस प्लानिंग के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। चलिए ठीक है, अब जरा इन डेट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखते हैं कि क्लास 10th और 12th के लिए आखिर शेड्यूल है क्या। तो ये रही दोनों क्लासेस की पूरी टेंटेटिव डेट शीट। हाँ, मुझे पता है एक बार में देखने पर यह काफी ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक मजेदार बात देखिए, दोनों ही क्लास के एग्जाम एक ही दिन यानी 17 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं और कुछ मेन सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं। तो कुछ मेन सब्जेक्ट्स की डेट्स पर नजर डालते हैं। क्लास 10th के लिए मैथ्स है 17 फरवरी को, फिर इंग्लिश 21 फरवरी, साइंस 25 फरवरी और सोशल साइंस 7 मार्च को। और अगर क्लास 12th की बात करें तो फिजिक्स है 20 फरवरी को, केमिस्ट्री 28 फरवरी और मैथ्स 9 मार्च को। लेकिन रुकिए, इस डेट शीट में ना एक बहुत ही नई और इंपॉर्टेंट चीज भी है। 2026 के शेड्यूल में क्लास 10th के लिए एक सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन का भी जिक्र है। जी हां, ये शायद नई एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जिससे स्टूडेंट्स को अपना स्कोर सुधारने का एक और मौका मिल सकता है। और ये एग्जाम्स मई 2026 से शुरू होंगे। अच्छा, अब इस पूरे डॉक्यूमेंट की सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इसमें एक छोटा सा शब्द है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है, और वो शब्द है टेंटेटिव यानी अस्थायी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये डेट्स अभी फाइनल नहीं है, ये बस एक ड्राफ्ट है, एक कच्चा चिट्ठा। सीबीएसई के सर्कुलर में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि फाइनल डेट शीट तभी जारी की जाएगी जब स्कूल सारे कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट जमा कर देंगे। मतलब जब सारे स्कूलों से स्टूडेंट्स की पक्की लिस्ट आ जाएगी, बस उसके बाद ही फाइनल डेट्स अनाउंस होंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का करना क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, इस इंफॉर्मेशन को एक्शन में बदलने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो डेट शीट में अपने सारे सब्जेक्ट्स मार्क कर लीजिए। फिर एग्जाम के सीक्वेंस को देखते हुए एक लंबा चौड़ा स्टडी प्लान बनाइए। हर एग्जाम की डेट से पीछे की तरफ काम करना शुरू कीजिए, मतलब छोटे छोटे माइलस्टोन सेट कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी, फाइनल डेट शीट पर नजर बनाए रखिए। तो अब सवाल यही है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स तैयारी के लिए मिली इस हेड स्टार्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि एक बात तो पक्की है, एक अच्छी तैयारी की शुरुआत हमेशा एक अच्छी प्लानिंग से ही होती है। All right, if you're in the CBSE world, you're going to want to listen up. We're diving into some huge news that just dropped, and I mean incredibly early. The tentative dates for the 2026 board exams. Yeah, I know exactly what you're thinking. 2026 board exam dates already? It just feels way too early, right? So the big question is this even real?
Well, yes, it is absolutely 100% real. What you're looking at right here is the official circular that the CBSE released on September 24th, 2025. So yeah, this isn't some rumor floating around the internet. It's the real deal, sent straight to all the affiliated schools. Okay, so that immediately brings up the most obvious question, right? Why on earth are these dates being released so far in advance? What's the logic here? The answer really starts with this one giant number, 45 lakh. That's 4.5 million students. Just think about that for a second. That's how many students are expected to take the Class 10 and 12 exams in 2026. Trying to coordinate something on that massive scale, well, you need a serious head start. And see, that's the whole point. To handle a number that big, you have to plan way ahead. And this is crucial. This early release isn't meant to cause stress. It's actually designed to reduce it for everyone. The circular itself says it's so students can create proper study plans, schools can get their own calendars in order, and even teachers can plan their personal lives. It's all about being proactive. All right, so now that we know why the dates are out so early, let's actually dig in and take a look at the schedule. Now, we're not going to go through every single subject, that would take forever, but let's just get a feel for the timeline. Okay, so for all the Class 10 students out there, the main exams are set to run from February 17th all the way through to March 9th, 2026. So that's roughly a 3-week window to get through all the major papers. And here we go. This is the detailed draft schedule. I know, it's a lot to look at, but you can see how it's laid out. For instance, they're kicking things off with a big one right away, mathematics on February 17th. And then if you look a little further down, you'll spot other course subjects, like science on February 25th. Now, let's switch over to Class 12. You'll notice the exam period here is a whole lot longer. It also kicks off on February 17th, but it stretches all the way to April 9th, 2026. And really, that extra time is just necessary to fit in the huge variety of subjects and different streams. And here is a look at the detailed schedule for Class 12. Again, there's a lot going on, but what's really interesting is seeing how they've structured it for the different streams. You can see the science stream gets rolling pretty early with physics on February 20th, but then some of the key commerce papers like economics don't show up until much later on March 18th. It's all a very carefully planned sequence. But you know, the exams themselves are only half the story, right? What happens after you turn in that paper is just as critical. So let's pull back the curtain a little and look at the evaluation timeline. The circular actually gives us a really fascinating peek into this whole process. It says, and I'm quoting here, that the evaluation of answer scripts will commence approximately 10 days after an exam and will be completed within 12 days. I mean, wow, that is an incredibly specific and tight schedule. Let's make that super clear with a real example. So take the Class 12 physics exam, which is on February 20th. Based on this plan, the evaluation for all those papers would kick off around March 3rd, and they expect to have it all wrapped up by about March 15th. It's like this rolling system designed to be as efficient as possible. Okay, so we've looked at the dates, we've looked at the process, but now we need to talk about the single most important word in this entire announcement, and that word is tentative. What does that really mean for you? Let's just be super clear about it. Tentative means it's not final. It is not set in stone, it's provisional, it's subject to change, and it is absolutely not a locked-in final schedule. And honestly, the document itself practically screams this at you. I mean, just look at that massive tentative watermark on every single page. The most important thing to remember here is that this is a detailed draft. Think of it as a plan, not a promise. So, that naturally leads to the big question for every student, parent, and teacher watching this right now. What are you supposed to do with this information? The answer is actually pretty simple. You should absolutely use this schedule to start your planning. Go ahead, map out your study goals, get your revision timeline sorted, but, and this is so important, do not make any firm commitments based on these dates. Don't book any travel, don't finalize family events around them. You need to wait for the final official date sheet from your school. So, in short, plan ahead with this draft, but only make your final moves based on the final version. That's really the smartest way to handle this.